Hello students, today I am going to teach you English tenses. What is tense? To understand tense, first you learn the examples of sentences. Now I have given 3 sentences. ମୁଁ 3ଟି sentence ଲେଖିଛି. First you see, I am teaching you now. I am teaching you now. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି. এই ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର. এই ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ କହିଲା ବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଥିବ. କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଥିବ. ତ ଏଠି ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପଢ଼େଇବା. I am teaching you. ପଢ଼େଇବା କାର୍ଯ୍ୟ. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢ଼େଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି. ତାହେଲେ ଏଠି ଇଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନକୁ ବୁଝେଇଲା. ଟିଚିଂ. I am teaching. ଆକ୍ସନକୁ ବୁଝଉଛି, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବୁଝଉଛି, ୱାର୍କ ବୁଝଉଛି. अच्छा ये वाक्य खाली वर्क को बुझेला. ये लक्ष्य कर, वर्क, एक्शन, एक्टिविटी. खाली ये वाक्य रे कार्य को बुझौछि ना आ कोन बुझौछि? आउ किछि बुझौछि कि? हां. कोन सेटा? ना समय. को समय पढौछि? ना वर्तमान पढौछि. ताले वर्तमान मु पढ़ौछि. नाउ आई एम टीचिंग यू नाउ. मु तुम मानको वर्तमान पढ़ौछि. पढ़ेवा कार्य सहित ता सहित समय कनेक्ट रहउछि. को समय रे पढ़ौछि. जदि बा इठी नाउ नथांता, जदि नाउ नथांता ताले कोन हि थांता? तथापि बुझेई थांता ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉ ସମୟକୁ ବୁଝଉଛି? ସମୟକୁ ବୁଝଉଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ସମୟକୁ ବୁଝଉଛି ପୁଣି କୋଉ ସମୟକୁ ବୁଝଉଛି? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ଉଛି. କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛି. ତାହେଲେ ସମୟକୁ ବୁଝେଇଲା. କୋଉ ସମୟ ବୁଝେଇଲା? ତାହେଲେ ଏଠି ସମୟ ବୁଝେଇଲା. ସମୟ ବୁଝେଇଲା, ଟାଇମ୍ ବୁଝେଇଲା. ଯଦି ଟାଇମ୍ ବୁଝେଇଲା, ଏଠି ୱାର୍କ ବୁଝେଇଲା. ତାହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ କୁ ବୁଝଉଛି, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବୁଝଉଛି ଏବଂ ସମୟକୁ ବୁଝଉଛି. ଓକେ, ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ବୁଝେଇଲା, ୱାର୍କ ବୁଝେଇଲା. ଓକେ, ତାହେଲେ ये जो टाइम बुझेला ये सेंटेंस रे को समय रे कार्यता चलिछि? टाइम बुझो ना वर्तमान. वर्तमान रे कार्य होछि. तब वर्तमान बुझेला टाइम. ताले प्रेजेंट को बुझेला, प्रेजेंट को बुझेला, वर्तमान. सेमती कम टू सेकंड एग्जांपल. He played cricket yesterday. से गतकाली क्रिकेट खेलिला. इति एक्शन कोन? वर्क कोन? द एक्टिविटी हला प्लेड. इति एक्शन जो कार्य को बुझेला, एक्टिविटी बुझेला, वर्क बुझेला. ताल प्लेड कार्य बुझौछि, से जो घटना कार्य. अच्छा, को समय से खेलला ना गतकाली खेलला? टाइम बुझेला. ओके, ताले गतकाली ताले इस कार्यटा जो से कला से कार्यटा एबे से कार्य अछि ना आगुर सरी जाइछि? आगुर सरी जाइछि. गतकालीटार सरलानी. से गतकाली खेलिथिला. जदि बा इस्टोटे न थांता तेबे भी बुझेई थांता से कार्यटी सरीछि बोली. ही प्लेड क्रिकेट. से क्रिकेट खेलिला. एबे खेलुनी. खेलिला. The work has been done. Okay, it is finished. এটা সরি গেল.
तेणु टाइम टा बर्तमान कौन बुझेला सी टाइम बुझौछि गतकाली जो कामटा सरी गला ताको हम इंग्लिश रे कहिबा फास्ट। तो टाइम टा कौन आसला टाइम टा आसला प्रेजेंट गला फर्स्ट एग्जांपल प्रेजेंट टाइम सेकंड एग्जांपल फास्ट टाइम। बिफोर स्पीकिंग मु कहिबा पूर्वरु एबे सेटा कहूची से खेला बोली गतकाली क्रिकेट खेला एटा कहिबा पूर्वरु सरीच बिफोर स्पीकिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कहिबा समय रे कार्यटा होची मु पढौची कहिबा समय रे काम चलची ताले टाइम हला प्रेजेंट फास्ट। देन नेक्स्ट कम टू थर्ड एग्जांपल ही इज गोइंग टू पुरी टुमोरो से आसंता काली पुरी जीवो से आपण काली कोड जाउछंती ना मु काली पुरी जाउछ माने पुरी जीवे जाइनी अच्छा से काली कोड जाउछ से काली पुरी जाउछ से काली पुरी जाउछ काली माने आसंता काली द वर्क हैज बीन डन has not been done yet कार्य पर्यंत हेनी पूरी जाइनी जीव एक्शन होची एक्शन वर्क इज गोइंग से जाउछ माने एबे जाउ जदी इति टुमोर न थांता तेबे बुझै थांता ही इज गोइंग टू पूरी से पूरी जाउछि तबने एबे जाउछि कितु इति टुमोर लागि थिबारु तेबे कोन बुझेला से आसंता काली पूरी जीव से आसंता काली पूरी जाउछि से आसंता काली पूरी जीव से त निथि वर्क रहिला इति टाइम रहिला ई जो टाइम को टाइम फ्यूचर टाइम दैट इज फ्यूचर टाइम the event or action is yet to be done it means after speaking कहिबा परे कार्यटा हो मु एबे कहिली से आसना काली पूरी जीवो तबे एबे मु कहिली पूरी जीवो बोली काली जीवो कहिबा परे कार्यटा हो। Now you see how many types of time the time is of three types present past and future okay now you see वर्क एक्टिविटी एक्शन प्रत्येक वाक्य रे वर्क रहउची टाइम रहउची वर्क टाइम कॉम्बिनेशन कौन सी घटना किंबा कार्य केते बेले घटुची सेई जो समय को बुझेबा पाई सेई जो कार्य को बुझेबा पाई समय इंडिकेट करिबा पाई आमे ई एक्शन पाई बसी से कोन वर्ब क्रियापद वर्ब दिस इज वर्ब ए वर्क एक्शन इवेंट पाई आमे बसेले वर्ब ई जो वर्ब इंडिकेट टू टाइम ओके देन व्हाट इज टेंस oh what are tenses tenses are the different forms of verb used to express the event or action in different periods of time. Tenses are the different forms of verbs used to express the events or actions in different periods of time. कौनसी घटना you see different forms of verbs verb has different forms event action पाई पढ़ेबा खेलिबा जीवा एई सब कार्य को घटना को बुझेबा पाई कार्य को बुझेबा पाई हम इंग्लिश रे बसाए verb सेई verb टाइम को इंडिकेट करूची एक्शन टाइम को तो इंडिकेट करिया पई की प्रकार verb बसाए verb जो विभिन्न फॉर्म डिफरेंट फॉर्म वर्ब्स यूज टू एक्सप्रेस इवेंट एंड एक्शन को एक्सप्रेस करूची
different periods of time, present, past and future. Present time को एक्सप्रेस करिबा पाई जो verb form बसुची ताही tense. Verb has different forms. 5 forms of verb are given: V1, V2, V3, V4 and V5. 5 प्रकार verb दिया जाइए. First form V1, base form the verb, first form the verb, that is present. There is present. This is V2, second form the verb. This is fast. This is V3, fast, participle, present, fast and fast participle. Third form of the verb. Okay, this is ing form, verb ing, going, playing, right? Now you see 2 infinitive, 2 plus verb, to go, to play, to eat, to write. Okay, 5 forms of verbs. Now we see here to indicate present. I am teaching now to indicate present. Which verb is used? Here you see am is a verb. Teaching is also another verb. The 2 verbs are here. You know, in lexical meaning, in dictionary meaning, अर्थबोध करुवा अनुसारे verb is of 2 types. 2 verb 2 प्रकार. गोटे auxiliary verb, another is a main verb, principal verb. गोटे auxiliary verb, गोटे principal verb. एटा तुम जानिछ. तो इठी लक्ष्य कर इठी auxiliary verb, principal दुईटी verb लागिछि. किंतु ई घटना प्रेजेंट घटना को इंडिकेट करिया पाई जो verb बसिछि सेही verb दुईटी verb बसिछि. किंतु लक्ष्य कर पिले ई am is the be verb. Be verb it is, are and am. It's for the past form the be verb is was, we are. Now see, be verb, am, is, are, be verb. Now be verb, the base verb, past verb, V1, be verb. Here teaching, this is V1, this is V4, okay. ing form V4, ing form लागिछि V1 लागिछि. ओके, लक्ष्य कर इठी आमे एटा को टेंस रे अछि बोली आमे जानिबा. verb को टेंस रे अछि बोली verb रो फॉर्म टी कोन बसछि बी verb बसछि. बी verb रो प्रेजेंट बसछि. जदि दुईटी verb अछि there are 2 verbs, an auxiliary verb and a main verb, the first verb takes tense. That is called finite verb. According to tense, verb is of 2 types. One is a non-finite verb and finite verb. Finite verb takes tense. These are finite verbs. V1 and V2 are finite verbs. Then other 3 are non-finite verbs. ये तीनोटी जाको non-finite verb. That is V3, V4, V5, PP, ing for 2 plus infinitive or 2 plus verb. ये तीनोटी होची non-finite verb. Now come to the point. I am teaching you now. If you will change this verb into another form, second form, then I was teaching. Okay. I was teaching then. सेतबेले मु पढौथिली. I was teaching. Now the verb teaching is unchanged. Teaching ta change होनी verb ta V4.
टीचिंग चेंज हो नहीं आईएनजी फॉर्म बदलुनी बदली गला भर टेंस चेंज कले verb has two forms every verb has two forms present and past okay now you see this is present if we change into another form then it is past form okay now then here this sentence is in present form present tense this is in present according to this finite verb takes tense this finite verb takes tense this is a present finite verb takes tense present tense and time present time present time present time present tense if we can change into past then I was teaching you then then verb is changing to was before was second form was before am second form was and was then it is in past form I was teaching you then ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ଉଥିଲି ତମକୁ ତାହେଲେ past okay now you see he played cricket yesterday played the second v2 second form of the verb played first form second form past form verb has two forms present and past but other three forms do not take tense they are never change according to the change of the tense बदल से बड़ी बदलती नहीं प्रथम देखो he played cricket yesterday से गतकाल क्रिकेट खेला this is in the past form so this sentence is in the past tense and in which time past time and past tense okay if we change this tense then he plays cricket he always plays cricket present form third person singular plays play okay now here's going to free tomorrow what's say about this is a very important sentence I'm going to free tomorrow this is what future time भविष्यत से समय अर्थात से कार्यटी आरंभ हेनी हबो ओके से जीव प्लानिंग करछि जीव बोली जाई पर which verb is used which form of the verb is used is there any future verb for to indicate future time no very important thing you have to remember there is no future form of verb to indicate future time to indicate future time there is present form of a verb you see there are two verbs this is auxiliary verb this is main verb this is finite verb either two verbs auxiliary and the main verbs then first verb is a finite verb that takes tense what is finite verb takes tense जे tense ग्रहण करछि जहा को देखि हम कहबा एटा प्रेजेंट के past tense अछि ताहा भी हम कहबा finite verb here it is finite verb this is non finite verb you see ing for non finite verb this does not take tense he is going he was going and first now he is going to puri jodi iti ame iti full stop kare he is going to puri tala phrase no tomorrow future planning tomorrow को indicate करिया पाई future को indicate करिया पाई future verb नाही there is no future form verb is there any future form of verb no here is present here you see present so this sentence is in present tense and future time present tense no future form no future tense only so tense is of two types present tense and past tense next class we have to learn this is part 1 tenses next time in part 2 I'll teach you about tense thank you